Human life is cheap in India. Civic apathy, pothole deaths, poor roads, poor infrastructure, lack of safety checks, building collapses. These have all unfortunately become endemic across the country, so much so that much of the public services we rely on for daily movement, shelter or commute are severely compromised in terms of their quality and therefore safety. It's almost as if Indians should consider themselves fortunate every second they live, having been left at the mercy of the possibility of a mishap at every step. What happened in Morbi in Gujarat above the Machu River on the 30th of October was a tragic manifestation of this apathy. 135 lives were snuffed out in a matter of seconds as a newly renovated suspension bridge collapsed that evening, leaving people literally clinging on to their lives while shoving many of those who fell into the marshy river to their deaths. In this horrifying turn of events, 49 of the dead were children. This is the third day of rescue operations and we are at present on the boat of these deep divers from the Indian Coast Guard. These are the main people on the ground. The reason for that is 2 people are still said to be missing in this river, and the missing people, it has been suspected that they have unfortunately gone inside the riverbed, basically reached the riverbed. The riverbed is very uncertain over here. There is marsh, there is water hyacinth that you can see in these visuals, and in some of the parts of this river it is deep down around 30 feet. This is because this was a quarry at one point of time during the ancient times, and that is why it becomes a Herculean task for these deep divers from the Indian Coast Guard to locate or to save people over here. They have been doing the work. They are not allowed to speak to the media. They are doing their work, but we are covering it from ground zero for our viewers. And since day one only, when this unfortunate and heart-wrenching incident took place, they have been telling us that they have saved many lives over here. But now the job becomes even more tougher because the bodies that came up on the river bed, you can say, or that came up above the river water, that was relatively easy to locate, but now it becomes very difficult because these are the people who are said to be still missing, and search and rescue operations are still underway. अंदर गए ना तो सीधा हम जो खड़े थे ना वही से पुल टूट गया, फिर सामने से टूटा, सब पानी के ऊपर जगमग था। हमें रुक के, क्योंकि हमको डर लगता था, इसलिए मैंने मेरे दोस्त को कहा कि 5 मिनट रुको, थोड़ा पब्लिक कम हो जाए फिर जाते। तो फिर टिकट 5 मिनट के बाद अंदर गए ना तो सीधा पुल नीचे आया, और मैं तो पुल के ऊपर पड़ा, मेरे दोस्त सब पुल के नीचे दब गए। फिर मैंने निकाला सबको, दोनों मेरे 2 दोस्त थे ना, उसको निकाला ने, एक छोटी बच्ची थी 6 साल की, उसको निकाला। आधा घंटे के लिए कोई नहीं हेल्प किया, सब वीडियो ने फोटो देखते रहे। सामने इतने थे, सामने पूरा पुल भरा हुआ था। इस साल 50 से 100 आदमी थे, मेरे दोस्त में सब सामने बहुत थे, इसलिए 3 टिकट लगे गए, 3 दोस्त थे हम। बाकी के कहाँ हैं? हम दोनों तो बच गए, लेकिन एक दोस्त नहीं रहा, फिरोज नाम था उसका। जब आप वहाँ गए तो रोका नहीं किसी ने आपको? नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका है। अंदाज से उस पुल पे कितने लोग मौजूद होंगे शाम के समय? 500-600 लोग, ज़्यादा लोग थे। पुल अचानक से गिर ही गया था, कैसे गिरा मालूम नहीं, गिर ही गया था बीच में से। बीच में चलने का आता है ना, वही निकल गया था पूरा का पूरा, सब लोग नीचे ही गिर गए थे पानी। छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ों को तो तैरना आता होगा, छोटे छोटे बच्चों को तैरना नहीं आता। बोल नहीं सकती अब मैं, बहुत बुरा हुआ, बच्चे लोग भी थे, बहुत मैं बोल नहीं सकती, इतना मेरे को दुख लगा है। जो कोविड में था ना, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई है। जो टिकट काउंटर है, और टिकट काउंटर से लेकर इस तरफ जब लोग चल के आया करते थे तो यहाँ से कुछ लोग एग्जिट भी हुआ करते थे, और ये वो जगह है
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये खंबा जो लगा हुआ है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इसकी दुर्दशा क्या हो गई है। आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर ये जो बांधा हुआ था रोड, पूरी तरह से ये भी जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तब ये टूट गया। गुजरात एफएसएल की टीम जो है गांधीनगर से स्पेशल आई और उन्होंने इस केबल ब्रिज को काटा और यहाँ से सैंपल्स लिए। ये वास्तविकता है कि ये टूटा और उसके बाद में जो लोग जरूरत से ज्यादा इस जगह पे मौजूद थे वो लोग एक साइड गिर गए और पुल पूरा वहां से भी टूट के धराशायी हो गया। बड़ी संख्या में लोग जब यहाँ पर पहुंचते हैं उसके बाद इस तरह का मामला जो है घटता है। एक साथ 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर पहले पानी में गिरते हैं, उसके बाद में बाकी के जो लटके हुए थे वो गिरते हैं। जिस तरह से एक साइड का केबल टूटा है और एक साइड के केबल को टूटने की वजह से ये गंभीर घटना हुई। आप देख सकते हैं ये जो इसकी सपोर्टिंग जो नेट लगाई गई थी लोहे की वो भी टूट गई है। हमने उस साइड से भी बताया है कि किस तरह से वहां पर इसका पूरा मलबा गिरा हुआ है और कल जब यहाँ पर हम मौजूद थे जिस तरह से हमने एक एक चीजें दर्शाई हैं वो सारी चीजें बताती हैं कि किस तरह से यहाँ पर घटना हुई है। इस परिवार में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को, उसकी पत्नी को और उसके 2 फूल जैसे बच्चों को भी खो दिया है। और ये सोनी परिवार जो मोरबी में ही रहता है, हम इन्हीं से बात करेंगे। कल तो संडे था એટલે दुकान छुट्टी थी, रजा थी, એટલે सब घर पे थे। बच्चे कुछ कहते थे आपको भी, पहले कभी याद मिलते होंगे तो कहते थे कुछ बड़े पापा मेरे लिए ये लेके आना। बोलते थे ना, हम रात को रहते थे, इधर आते हैं ना तो हम बोलते हैं चलो घूमने के लिए, चलो घूमने के लिए, ऐसा बोलते थे। तो अच्छा संडे था तो पापा घरे था तो चलो झूलता पुल पर फरवा जाऊँ, तो पापा की चलो, तो सब भी झूलता पुल पर फरवा गया। हम तो रात को रहते थे। The sorry state of bridges in India is a monumental failure in itself, and there have been tragically a series of collapses over the years, resulting in numerous deaths. What happened in Morbi is the worst tragedy of its kind in India. And when one mines deeper into the circumstances that led to this disaster, the apathy, callousness, and disregard towards human life on the part of the administration and the contractors appears to be writ large. There is an increasing demand for serious criminal liability. Several individuals have now been arrested, but many aren't convinced that enough has been done. After all, there were multiple lapses. This included, among others, the opening of the bridge to the public without requisite clearances like a fitness certificate, allowing more people to congregate on the structure than what was actually prescribed, and hastily done repairs as well. This doesn't just make the contractor Ajanta Oreva and its owner Jaisukh Patel both morally and legally culpable, but also the administration, which was meant to supervise the regulatory process and provide some oversight. People have been arrested, inquiry is still on, and I'm very hopeful all those who are related to the accident will be soon arrested, whatever level he is at or mightiest he might be. Well, it's shocking. I mean, PM is going there to meet the relatives of the people who died, and then to see the otherwise the administrative issues of this that place, but they are playing politics into it. I mean, is a visit by the Prime Minister. They should appreciate the Prime Minister himself is personally going for such instance, but as opposition is, they are playing politics into it. There have been several arrests so far, but no one higher up in the municipal administration or even, as of the 4th of November, the owner of the company that was contracted to undertake the renovation of this century-old bridge. In fact, Jaisukh Patel, the owner of Ajanta Oreva, had inaugurated the bridge on the 26th of October this year, well before it was supposed to, and had then said that due to the quality of the material involved in the renovation, it would not require any repairs for the next 8 to 10 years. SIT finding and the findings of the forensic report clearly point out that there was no maintenance work which was done on this Morbi bridge, and all the responsibility to take care of the strength was on this bridge. You can see the rusted structure. I'll just do a demo. I'm taking out my this white handkerchief and I'm trying to, you can see
it's white, and I'm just trying to rub it for the bit, and you can see the change. So that clearly shows that there is ample amount of rust. There was no proper maintenance work which was done. There was nothing which was done on the ground. You know, look at the condition of this bridge. Earlier to that, there was, you know, strong wooden structure which was there since 130 years, which was giving strength. This is the supporting wire which is still there, which was already rusted. I just showed you just a short while back. And because of the strength, the weight of this particular structure, everything has been demolished. इनमें से 2 जो 4 को रिमांड में भेजा गया, इनमें 2 लोग जो थे औरेवा कंपनी के मैनेजर थे, 2 लोग जो थे जिन्होंने फैब्रिकेशन वर्क की ब्रिज के लिए किया है। और बाकी जो 5 लोग जुडिशल कस्टडी भेजे गए वो लोग कौन थे? वो लोग थे जो सिक्योरिटी पर्सन थे और टिकट वेंडर थे। नहीं, अभी पुलिस की तरफ से कुछ बताया नहीं गया वो बारे में, वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वो रिपोर्ट के बारे में आईओ ने बताया गया कि जो केबल है उसको रस्ट लग गया था, जंग लग गई थी। उसके बारे में प्राइमा फेसी एफएसएल ऑफिसर का ये कहना है कि पुरानी केबल है। रिनोवेशन के नाम पे क्या उन्होंने लोगों को गलत बताया था कुछ? आईओ का ये कहना है कि सिर्फ फ्लोरिंग बदली गई, वो केबल नहीं बदले गए और उनका ठीक से मेंटेनेंस, ऑयलिंग, ग्रीसिंग कुछ किया नहीं गया वो। This tragedy happened in Prime Minister Narendra Modi's home state. He expressed his condolences. शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस का ये अवसर भी हमें एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने, कर्तव्य पथ पर बने रहने की प्रेरणा दे रहा है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में सरदार पटेल का धैर्य, उनकी तत्परता से सीख लेते हुए हम काम करते रहे, आगे भी करते रहे। कल ही गुजरात में एक नितांत करुण घटना घटित हुई है। एक ही दुर्घटना में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई है। दुर्घटनाओं पर किसी का बस नहीं होता है, परंतु पूरे देश की संवेदनाओं को झंझोड़ने वाली ये दुर्घटना ने न केवल गुजरात, पूरे देश के लोगों के मन को दुखी और आहत किया है। मैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है वो सभी मृतक व्यक्तियों के, बच्चों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को चिर शांति मिले। In fact, while he was part of the Rashtriya Swayamsevak Sangh in the late 1970s, Prime Minister Modi had been actively involved in rescue and rehabilitation efforts during the Machu Dam tragedy, again in Morbi, when thousands had perished. He was to return here again following another shocking turn of events. He took stock, visited the site of the tragedy, and then proceeded to the hospital in which many survivors had been admitted, and subsequently met the local police officers and officials.
There's been a political war of words over what has transpired in Morbi. Many from the opposition reminded the BJP about the comments made by the Prime Minister Narendra Modi when he had called in 2016 in West Bengal the collapse of a flyover in Kolkata as an act of fraud. Very, very, very awful thing that has happened, and certainly very strict action should be taken. And apparently the company that was given this contract, the owner is close to the BJP ministers, and now what is most unfortunate is that BJP supporters are trying to put the blame on the people. They were shaking it, they were doing this, they were doing that. That's not the point. The point is you are responsible, your government is responsible. Our deepest condolences to the families. Main objective right now is to save lives. Then the government of Gujarat is answerable. First of all, I beg to differ so far the death toll is concerned. And some political party, they have asked for CBI probe. I wonder and I doubt, and I am sure CBI is being controlled by the remote control from the drawing room of Gujarat. How can we expect that CBI will be probing into independently and neutrally? जो भी लोग इस ब्रिज बनाने में इन्वॉल्व है, इतना जल्दी ये जो ब्रिज दुरुस्त करने के 5 दिन जो पहले उद्घाटन हुआ और 5-6 दिन में ही कोलैप्स हुआ, ये क्या कारण है और इतने लोगों को छोड़ने की कोशिश किसने की, इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए. We want to know where is the SIT report of the Surat Takshila fire episode? Where is the SIT report of the paper leak? Where is the SIT report of the GIDC gas leak? Who trusts these SITs in Gujarat? Ask any citizen of Gujarat, they don't trust the SITs. Therefore, we demanded a judicial inquiry, a time-bound judicial inquiry. We demanded the Chief Minister's resignation because he will be in a position to influence the inquiry. Gujarat is a poll-bound state with elections set to be held on the 1st and 5th of December this year in 2 phases and the results to be out on the 8th. The BJP has dominated in Gujarat for more than 2 decades, and Morbi is part of the state that has solidly stood behind the BJP for a long time. While it would be too early to draw conclusions, there is anger on the ground. It cannot get more heart-wrenching, more brutal for anybody. Such was the case for the Shamadar family from Morbi. There were 8 members in the family, barring the lady of the family. 7 unfortunately died in the Morbi bridge collapse. 4 were young kids. આટલા વર્ષો જૂનો હતો કોઈ દી નથી ટોઈટો, પછી આ નવો બનાવેલો કેમ ટોઈટો? અને આવી વસ્તુ બનાવી હતી પછી ની સિક્યુરિટી તો રખાય, બચાવવાની કઈક વસ્તુ રખાય. ઘણા બધા લોકો આવી રીતે વયા ગયા છે. કોઈ ઉપર આવું ન થાય કે જેનું આખું પરિવાર વયું છે. હિન્દુ યા મુસલમાન બધાય વયા ગયા છે. બચાવવામાં પણ બધાય હતા, કોઈ બચાવી જ ન શક્યા કોઈ નથી. એટલે આવું કોઈ ઉપર ન થાય, આવું બનાવતા હોય તો ન બનાવે બસ. जब 1.5 घंटे के बाद प्रशासन उधर पहुंचा है तो उसने लाशें निकाली है. जो बचाना था वो तो काम मोरबी की जनता ने पहले ही कर चुके थे, क्योंकि लड़के थे उसने ही सबने काम कर चुके थे. मैं वही बोल रहा हूँ कि जहाँ जो एक हिस्सा ये हादसा हुआ है बराबर, तो उधर डॉक्टर को 2-4 डॉक्टर रखने चाहिए कि भाई आदमी निकल के बाहर लेके आ रहा है तो हम उसको पंपिंग करें. कुछ मैं सबको मालूम है ये किसकी गलती है ना. ये जो आप बोल रहे इन्होंने जो 9 लोगों को गिरफ्तार किया, ये छोटे छोटे लोग हैं, ठीक है, टिकट काटने वाले. मेन आदमी है इसका मालिक, वो भी अरेस्ट नहीं हुआ, ठीक है. उसके बाद मेन आती है गवर्नमेंट. ये कोई प्राइवेट नहीं था, गवर्नमेंट के अंदर था. इसमें कलेक्टर है, प्रशासन है, चीफ ऑफिसर है, सब लोग गवर्नमेंट ने दिया था. This is truly a test for the BJP and the state administration led by Bhupendra Patel, and the governance model centered on development that has been a major pole plank for the party over the years in Gujarat. The foremost responsibility that they now have is to take steps towards ensuring that justice is done, and the people of Gujarat and elsewhere will be closely watching.